My lovely students, welcome to Mathological. And this will be the sixth set in CAT DLR series. Start करते हैं session. And if you have not already subscribed to our channel, then make sure to subscribe to our channel. Also press the bell icon. You can also message me on Telegram at adityakt. So लेते हैं एक fresh set. And this is the set followed by 5 questions. Pause the video and try to solve this set yourself. Let us read out the set properly. So Gambhir is serious about India's debacle in recent T20I match against Ireland. He is pondering about 3 separate squads for 3 formats of the game: Tests, T20Is and ODIs. He has a cumulative pool of 45 players from which he will select 3 separate squads of more than 12 but less than 18 players, such that no 2 squads have any player in common and every player is part of one of the squads. ठीक है, सो टोटल प्लेयर्स हमारे पास 45 हैं, जहां से कि देयर विल बी 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम फॉर विच स्क्वाड्स आर बीइंग क्रिएटेड फॉर टेस्ट मैचेस, for T20Is and for ODIs. And you have to select players such that all 3 squads must have more than 12 members but less than 18 players. And apart from that, no 2 squads can have any player in the common. And every player must be part of one of the squads. तो सारे के सारे 45 प्लेयर्स को किसी ना किसी स्क्वाड में तो हमें रखना ही रखना है. Either they will be in टेस्ट स्क्वाड or T20I squad or ODI squad. Bowlers and all-rounders and batsmen, these are 3 types of players with at least 1 player of every type in every squad. Then we have some facts which are known. और फिर हमें कंडीशंस गिवन फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस भी हमारे क्या है, पहला क्वेश्चन जैसे क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इफ, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे थीटा है एक्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन. अरेंज करने की कोशिश करते हैं इसको. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स: टेस्ट मैचेस, ODI मैचेस and T20Is. And then we have 3 types of players: batsmen, bowlers and all-rounders. So first condition, the number of batsmen in the test squad is more than those in the ODIs, and number of batsmen in the test squad is average of number of batsmen in the other 2 teams. Other 2 squads होगा to be precise. ये टीम की तो बात ही नहीं हो रही अभी तो. नंबर ऑफ बैट्समैन इन द टेस्ट स्क्वाड इज मोर देन दोज इन द ODIs. तो अगर टेस्ट में हमारे पास ए नंबर ऑफ बैट्समैन है, ODIs में बी है और T20Is में सी है, तो ए शुड बी ग्रेटर देन बी. दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन. ओके, एंड देन ए इज आल्सो इक्वल टू एवरेज ऑफ बी एंड सी. ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 2a विल बी इक्वल टू बी प्लस सी. और जब भी कभी ऐसा गिवन हो कि 3 नंबर्स हैं जिनमें कि एक नंबर हमारा बाकी 2 का एवरेज है, सो इन दैट केस द नंबर्स आर ऑलवेज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सो इफ एवरेज इज ए एंड ए इज ग्रेटर देन बी, सो इन दैट केस सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए. ठीक है, सो बी ए सी विल बी एन AP, will be forming an arithmetic progression. Next statement, number of bowlers in the test matches and ODIs are equal. The number of bowlers are equal for test matches and ODIs, and number of bowlers in T20Is squad are 28.57% of the total pool of bowlers. 28.57% यानी कि 2/7. If there are total 7 bowlers, 7x bowlers होंगे तो 2x will be part 220Is. Remaining are equal, तो 7x में से 2x चले गए. T20Is में remaining are 5x, तो 5x by 2 will be part of test matches and 5x by 2 will be part of ODIs. Now for 5x by 2 to be an integer, x must be a even number. ठीक है, बेसिकली सिंपली हमने क्या किया कि अगर 7 हमारे पास बैट्समैन थे तो 5 by 2 and 5 by 2 will be in test matches and in ODIs, and remaining 2 will be in 2020Is. बट नंबर ऑफ प्लेयर्स तो हमारा इंटीजर होगा, वो थोड़ी फ्रैक्शन में होगा. तो एक बात क्लियर है कि हमारे जो नंबर ऑफ बॉलर्स होगा दैट मस्ट बी एटलीस्ट 14, कम से कम 14 तो होगा. अगर 14 नंबर हुआ तो इन दैट केस देयर विल बी 5 टेस्ट प्लेयर्स, 5 ODI players and 4 T20I players. So either this will be 14 or this will be multiple of 14. यानी या तो 14 होगा या इट कुड बी 28. 21 अगेन नहीं हो सकता क्योंकि 21 में भी हमारा टेस्ट बॉलर्स और ODI बॉलर्स फ्रैक्शन में आ जाएंगे. तो या तो 14 होगा या 28 होगा एंड सो ऑन. और टोटल वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू 45. दैट इज अनदर कंस्ट्रेंट जिसका ध्यान रखना है कि 28 पॉसिबल भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की. 37.5% of all-rounders are selected for T20Is while the remaining are distributed equally in the squads of Test and ODIs. तो अगेन टेस्ट एंड ODI में ऑलराउंडर्स का नंबर इक्वल है. तो 37.5% which is equal to 3/8 are part of T20Is. तो अगर 8 में से 3 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
T20Is में तो बचेंगे अगेन 5, यानी 5/2 एंड 5/2 विल बी इन टेस्ट एंड ODI बाय द सेम लॉजिक। यहाँ पे भी देखेंगे क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा है 5/2, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। तो minimum 16 must be all-rounders, and in that case 5 will be in test matches, 5 will be in ODIs, and 6 will be in T20Is. 6/16 that is 37.5%। और यहाँ भी स्टोरी सेम रहेगा, ऑलराउंडर्स में भी या तो 16 होंगे या इट कुड बी 32 और इट कुड बी 48 एंड सो ऑन। बट सिंस टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स, बॉलर्स एंड बैट्समैन दैट इज इक्वल 45, तो क्या यहाँ पे 32 ऑलराउंडर्स पॉसिबल है? क्योंकि ऑलराउंडर्स ही 32 हो जाएंगे तो रिमेनिंग बचेंगे 13, जबकि मिनिमम 14 मस्ट बी बॉलर्स, यानी कि 32 इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज क्लियर दैट देयर मस्ट बी एक्जैक्टली 16 ऑलराउंडर्स। सिमिलरली नंबर ऑफ बॉलर्स भी 28 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने नंबर ऑफ बॉलर्स 28 ले लिया तो फिर एक ही हमारा बैट्समैन होगा, ओनली वन बैट्समैन। और हमें ये क्लियरली पता है कि एटलीस्ट वन प्लेयर ऑफ ईच टाइप शुड बी इन एवरी स्क्वाड। तो कितना भी कम वैल्यू होगा हमारा बैट्समैन का, भाई कम से कम एक बैट्समैन रहेगा ओडीआई स्क्वाड में, और ओडीआई का नंबर अगर लेसर देन टेस्ट मैचेस है, टेस्ट मैच में मिनिमम 2 तो रहेंगे। इन दिस 2 इज एवरेज ऑफ ओडीआई एंड T20I, तो T20I में मिनिमम 3 रहेंगे, तो मिनिमम भी होगा तो 6 होगा, तो 1 से तो काम चलेगा नहीं हमारा, ये बात पक्की है। ठीक है, सो डेफिनेटली 14 मस्ट बी नंबर ऑफ बॉलर्स, 16 आर ऑलराउंडर्स, 14 आर बॉलर्स, रिमेनिंग विल बी 15 विल बी बैट्समैन, बिकॉज टोटल 45 है। अब एबीसी को फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, बिकॉज सम ऑफ ए बी एंड सी दैट इज इक्वल 15 and 2a is equal to b plus c put कर दो, तो 3a will be equal to 15 and hence a will be equal to 5. So number of batsmen in the test matches should be equal to 5. Okay, and then sum of number of batsmen in the ODIs and T20Is that is equal to 10. अब क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होगा? अब क्योंकि टेस्ट मैचेस में देयर आर 5 बैट्समैन एंड नंबर ऑफ बैट्समैन इन द ODIs should be less than 5, so it could be 4, it could be 3, it could be 2 or it could be 1. और sum of number of batsmen in ODI and T20I that is equal to 10. So अगर 4 बैट्समैन आ रहे हैं ODIs में तो there must be 6 in the T20Is. अगर 3 आ रहे हैं ODIs में तो 7 विल बी ऑन द T20Is, अकॉर्डिंगली 8 और 9 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो टीम के मेंबर्स कितने आ जाएंगे? टेस्ट मैचेस में फिक्स हो गया 5 5 5 15 प्लेयर्स इन टोटल। ODIs में 4 + 5 + 5 दैट इज कुड बी 14 और 13 और 12 और 11, और T20Is में इट कुड बी 6 + 4 + 6 कुड बी 16 17 18 और 19। नाउ एक एडिशनल कंस्ट्रेंट भी था हमारा स्टार्ट में, देयर आर 3 सेपरेट स्क्वाड्स and each squad has more than 12 but less than 18 players. So players in any squad should be between 12 and 18. Neither equal to 12 nor equal to 18. ना तो 12 से छोटा हो सकता है, ना 12 हो सकता है, ना 18 या उससे बड़ा हो सकता है। So definitely between 12 and 18 चाहिए, it could be 13, 14, 15, 16, 17. So definitely 12 and 11 are not possible. And similarly, we cannot have 18 or 19 either. दो ही केसेस बने हमारे पास कि either there will be total 14 players in the ODIs and accordingly 16 players in T20Is, or 13 in ODIs and 17 in T20Is. दो केसेस हमारे बन रहे हैं यहाँ। इज दिस मच क्लियर? अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statements is are correct? First statement, number of batsmen in the test squad which is equal to 5 and number of bowlers in the ODI squad are equal. So bowlers in ODI squad that is also equal to 5. So yes, these are equal. First statement is correct. Second statement, number of all rounders in the test squad which is equal to 5 again, and number of batsmen in the T20I squad that can be equal. पहले वाला स्टेट में क्या था? आर इक्वल, यानी कि डेफिनेटली इक्वल होगा हर एक केस में। यहाँ पे कैन भी पॉसिबल है इक्वल होना, बट क्या हो सकता है? बिकॉज T20Is में नंबर ऑफ बैट्समैन आर ईदर 7 और 6, तो वेदर 7 हो तो भी और 6 हो तो भी, इन ईदर केस दीज कैन नॉट बी इक्वल। तो सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ bowlers in T20I squad which is equal to 4 and number of batsmen in ODI squad which is equal to either 3 or 4 again can be equal. So yes, in one scenario, when number of batsmen in the ODI squad that is also equal to 4, in one scenario they can be equal. They can be equal, can be unequal, तो equal होना ही possible है। तो third statement is correct. First correct है, third correct है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन D. First and third only are correct. Okay. Next question. If the T20I squad has the maximum possible number of players allowed under the given conditions, then how many batsmen are there in the ODI squad? The maximum possible number of players are there in the T20I squad, which implies that number of batsmen must be equal to 7. तभी तो मैक्सिमम नंबर आएगा हमारा, क्योंकि हमारे बॉलर्स तो कांस्टेंट है और राउंडर्स भी कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन T20I विल बी इक्वल टू 17 और नंबर ऑफ बैट्समैन विल बी इक्वल टू 7, बट इन दैट सिनेरियो नंबर ऑफ बैट्समैन इन ODIs विल बी मिनिमम व्हिच इज इक्वल टू 3. आंसर विल बी 3 इन दिस केस.
Third question. In the cumulative pool, only 4 batsmen are left-handed and every squad must have at least one left-handed batsman. So what is the minimum possible number of right-handed batsmen in the T20I squad? So there are total 4 left-handed batsmen in cumulative pool, यानी कि out of 45. तो 45 टोटल प्लेयर्स थे, जिसमें से कि हमारे नंबर ऑफ बैट्समैन कितना था? 15 था आई गेस. हाँ 15 था. तो आउट ऑफ 15 बैट्समैन देयर आर 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड एटलीस्ट वन बैट्समैन मस्ट बी देयर, वन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मस्ट बी देयर इन एवरी स्क्वाड. तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 4 को? 1 1 and 2. Two teams will be having exactly one left-handed batsman and one team will be having two batsmen, two left-handed batsmen. So what is the minimum possible number of right-handed batsmen in the T20I squad? Now T20I squad में number of batsmen can be either 6 or 7. दो cases possible हैं, either 6 batsmen are there or 7 batsmen are there. Our purpose is to ultimately minimize number of right-handed batsmen. Number of right-handed batsmen को हमें minimize करना है. तो पहले तो ओवरऑल जो हमारा नंबर ऑफ बैट्समैन उसको मिनिमाइज करते हैं और उसके बाद में नंबर ऑफ राइट हैंड बैट्समैन को मिनिमाइज करेंगे. तो नंबर ऑफ बैट्समैन कैन बी इक्वल टू 6 और 7. मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम 6 है, तो 6 वाला केस लेते हैं कि तभी हमें मिनिमम नंबर ऑफ राइट हैंड बैट्समैन मिलेगा. अब इफ देयर आर 6 बैट्समैन तो सम विल बी लेफ्ट हैंडेड एंड सम विल बी राइट हैंड. तो इधर देयर विल बी वन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और देयर विल बी टू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. और अगर वन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होगा, राइट हैंड बैट्समैन विल बी इक्वल टू 5. इन केस ऑफ 2 इट विल बी इक्वल टू 4. और क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है राइट हैंड बैट्समैन को, तो आंसर विल बी इक्वल टू 4. That when there are total 6 batsmen, in that case with 6 batsmen, when there are 2 left-handed batsmen, number of right-handed batsmen will be minimum, which is equal to 4. तो मिनिमम पॉसिबल इज इक्वल टू 4. अगर मैक्सिमम पूछता तो फिर हम 7 वाला केस लेते और 7 में से सिर्फ एक ही अपना रखते लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, तो यानी कि नंबर ऑफ राइट हैंड बैट्समैन मैक्सिमम कुड हैव बीन इक्वल टू 6 बट मिनिमम इज इक्वल टू 4. 4 इज द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो जाता है 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The T20I squad contains maximum possible number of players for upcoming series against England, and Abhishek and Shivam are two batsmen who are part of the T20I squad. In how many ways can 4 batsmen be selected if both Abhishek and Shivam must be selected in the team? So it contains, T20I squad contains maximum number of players, यानी कि there must be 7 batsmen in the squad. ठीक है, this is squad और it contains total 17 players, out of which 7 are batsmen. Or out of these 7, we also have Abhishek and Shivam. They are part of the team, part of the 7. And we have to select them such that we are selecting total 4 players out of these 7. But there is a condition that both Abhishek and Shivam must be selected. So 4 हमें total select करने हैं out of these 7. But 4 में से अभिषेक और शिवम तो select होंगे ही होंगे. 2 are already selected, ये तो हमेशा ही select करना है. रिमेनिंग जो हमारे बच गए आउट ऑफ 7, 7 में से 2 तो हो गए अभिषेक एंड शिवम. So from remaining 5, we have to select 2. 2 to be selected. The number of क्या आ जाएगा? 5C2, which is equal to 10. Okay, so there are 10 ways to select other players. Clear? Next question. The bowlers in the cumulative pool are either right arm bowlers or left arm bowlers. Every squad contains at least 2 right arm bowlers. The number of left arm bowlers in the test squad is twice the number of left arm bowlers in the T20I squad. So how many right arm bowlers are there in the test squad? The bowlers in the cumulative pool are either right arm or left arm. And every squad contains at least 2 right arm bowlers. So in every squad, we have greater than or equal to 2 right arm bowlers. And number of left arm bowlers in the test squad is twice the number of left arm bowlers in the T20I squad. Number of bowlers test squad में कितने हैं? 5 है. And T20I that is equal to 4. And if out of 5, if out of 4 we have X left arm bowlers, so in that case, in test squad, left arm bowlers will be equal to 2X. ठीक है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस पॉसिबल है भाई. या तो x इक्वल टू 1 हो सकता है. इफ x इज इक्वल टू 1 तो 2x विल बी इक्वल टू 2. और इफ x इज इक्वल टू 2 तो 2x विल बी इक्वल टू 4. अब x इक्वल टू 3 तो होना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जैसे ही x इक्वल टू 3 लोगे 2x 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल बॉलर्स हमारे पास स्क्वाड में 5 है. तो यही दो ऑप्शंस पॉसिबल है, इधर x विल बी इक्वल टू 1 और 2,
then 2x will be equal to 2 or 4. And additionally, it is given that every squad contains at least 2 right arm bowlers. So minimum 2 right arm bowlers must be there. अब अगर हमने टेस्ट स्क्वाड में टोटल 4 प्लेयर्स ले लिए, 4 लेफ्ट आर्म बॉलर्स ले लिए, in that case there will be only one right arm bowler. But we have to take at least 2 right arm bowlers. So even x is equal to 2 is also not possible. Because x equal to 2 4 हो जाएगा और फिर वहां पे हमारे पास 2 right arm bowler नहीं बचेंगे. So x must be equal to 1. That is the only case possible. And in that case 2x will be equal to 2. So number of right arm bowlers will be equal to 3 in this case. The question हमसे right arm bowlers से पूछा है, so they will be equal to 3 in test squad. Straight forward question था. Clear है बात? ठीक है. So these were the questions in this set. I believe जो भी question डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. और this was basically a question which was very similar to one cat previous set. ठीक है. और कुछ और मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए. अगर तुम्हें सेशन पसंद आया हो, सेट पसंद आया हो, तो ऐसे ही एक और बढ़िया सेशन है जिस पे डिस्कस कर सकते हैं और भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक सेपरेट सेट बना के. ठीक है. अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में देना. तुम्हें सेशन कैसा लगा और किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना. तो सेशन का पसंद है उसको लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे करना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.